ओम शांति। सच्चे दिल पर साहब राजी, परमात्म दिल तख्त नशीन, सच्चे दिल से दुआएं Gentil. कमाना। दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग न भी Le हो, vrai cœur, le Père लेकिन est content बाप avec un को cœur दिल honnête. वाले पसंद हैं। On vous दिमाग prépare भी le 6 बाप décembre. इतना बड़ा दे देता है, Le Père जिससे रचयिता को जानने से aime रचयिता seulement के les enfants qui ont un vrai cœur. अंत की नॉलेज जान Même लेते हैं। si vous n'avez pas un intellect qui नौकर est भी très बड़े intelligent, हैं, सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्चे दिल से le सेवा Père, की, celui qui réconforte les वैसे cœurs, ही n'aime que les दिमाग enfants के qui ont un आधार cœur से vrai. सेवा Même की। si votre intellect ne दिमाग présente pas la वाले forme नाम d'intelligence कमाते caractéristique dans हैं, ce monde, दिल le Père वाले aime ceux qui ont un cœur दुआएं vrai. कमाते हैं। Le Père remplit votre tête de sorte qu'en connaissant le Créateur, connaissez également son en fonction d'un cœur propre et vrai et non sur la base du आदित्य service. परिवार में Avez-vous servi avec un आपका cœur vrai ou juste avec स्वागत votre है। tête? आज Ceux qui है servent avec leur 6 tête gagnent un nom, et ceux qui सच्चे servent दिल avec leur पर cœur reçoivent des साहिब राजी bénédictions. परमात्मा दिल तक नशीन। Le आज का Seigneur est टॉपिक है content avec un cœur सच्चे honnête, दिल से दुआएं assis कमाना। sur le trône du cœur de अभी Baba. हम मोहिनी दीदी से Donc सुनेंगे। aujourd'hui, le sujet, c'est avec un vrai cœur pour recevoir des bénédictions. ओम शांति। कहते हैं ना कि चलो दिल से बातें करो, दिल की बातें करो। खास करके बाबा के लिए कि बाबा से Ils disent दिल की toujours parler avec le cœur, parlons à partir du cœur, spécialement ये प्रश्न ब्राह्मण parlons परिवार avec un में cœur हमेशा pur. रहा Cette question dans la famille brahmine est toujours présente, मन और दिल que ce soit de la tête ou du cœur, सब में क्या de फर्क है। l'esprit ou du cœur. Quelle est la différence entre cela, ces aspects? दिमाग में भी फिर बुद्धि होती है, विवेक होता है। Même, तो एक एक बात को कहने में जैसे हम कहते ils हैं disent qu'il कि y a l'intellect et मन aussi la लगा के काम sagesse. करना। Même quand nous इसका मतलब disons, même quand एकाग्रता nous parlons un seul कि अगर aspect, मन लगा के काम करेंगे disons तो que सफलता होगी, l'esprit et l'intellect एकाग्र होगा। doivent travailler, हर c'est-à-dire कार्य से doit पता être लगता है présent pour la कि ये काम concentration, बहुत मन लगा के किया है। pour chaque तो tâche, मन afin qu'il लगा के soit bien काम करने réalisé. से हमारे Donc, ils अंदर le गट्स font, ils आता le है, réalisent avec शक्ति le आता cœur. है। En nous फिर faisant क्या cela, किसी का मन il y a लगा le के pouvoir de करेंगे la तो बहुत créativité qui सुंदर naît तरीके en से nous. कर पाएंगे। Vous नहीं तो faites करना toute पड़ता tâche है और avec un नियमित से esprit करते plein हैं et avec cœur, तो पता लगता है कि c'est उसकी जो bien. क्वालिटी है काम की वो Mais si बहुत vous ne अच्छी faites है। pas cela sans और सबसे cela, बड़ी बात अपने को खुशी नहीं होगी। la qualité जो मन n'est pas लगा la के même. काम करते हैं ना उनको खुशी बहुत होती है। Et vous ne vous sentirez pas si राइट। और heureux. दूसरा है फिर दिमाग की, Tandis तो que si दिमाग vous में mettiez भी tout फिर cela ensemble, il y aura कोई beaucoup de bonheur. बुद्धि अच्छी होती है, कोई में Il y a विवेक l'esprit et बहुत होता है l'intellect. और कोई जैसे L'intellect बाबा ने कहा ना est कि bon. बाबा ने भी कैसा दिमाग दिया है Baba dit de कि nombreuses fois व्यवस्था que Baba वाद nous donne और रचना quelle के sorte आदि अंत्य अंत को समझने का d'intellect, इतना बड़ा दिमाग बाबा ने दे दिया l'intellect tel que vous soyez capable de कि comprendre le विदेहों से Créateur, le समय début, le लोग milieu et la fin de la création. शास्त्र पढ़ते हैं, वेद Baba nous donne पढ़ते une हैं, telle tête उपनिषद पढ़ते हैं। aux enfants. Et les gens du monde, आपकी dans les संस्कृति की गहराई Écritures, से ils étudient les उनको Upanishads परमात्मा के बारे में, et सृष्टि beaucoup चक्र के बारे de में, आदि profondeur ou de मध्यांत के बारे compréhension des में Écritures ज्ञान प्राप्त parlent होता है। très peu तो मुझे याद है कि de Dieu. थोड़ा भी पढ़ने की Il y a कोशिश un petit करो peu de तो हम connaissance लोग को en समझ cela, में नहीं आएगा। mais nous savons संस्कृत que में तो होता है लेकिन même si nous lisons un peu पर cela, बाबा जब nous ne आते serons हैं pas capables de अपना comprendre सहज करके parce que सब c'est dans बताते un हैं। langage ऐसे तो circonscrit. देखो व्यक्ति इशारे
Mais aussi, Baba dit qu'il rend toute chose si facile pour nous. Nous voyons les signaux avyakts à travers chaque mot, avec la vision élevée de Baba, d'une façon très claire, ça deviendra encore plus clair, d'une façon ou d'une autre, ça deviendra plus clair pour vous. Donc, nous sommes là pour channel la connaissance et pour en parler. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très célèbres de leur grand intellect. Mais il y a aussi les gens du monde comme les scientifiques, les gens de l'environnement, les créateurs, les personnes présentes dans les environnements, ceux qui sont des chercheurs, comme s'il y a un Mahatma qui est là, comprenant quels sont les profonds secrets, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de tout le conscient prend votre vie comme exemple, parce qu'il y a de la sagesse. Si le sagesse éveillée, Baba dit, que lorsque vous étudiez, vous vous souvenez de toutes choses. Et alors nous disons, oh, cette personne est très bonne intellect, se souvient de tout. Mais il y a une petite différence. L'énergie est la même. Mais il y a une différence dans l'énergie en cela. Et nous devons porter une attention à tout cela. Donc, Baba dit, si vous faites cela à partir de votre cœur, toute tâche qui est faite depuis votre cœur, vous recevez des bénédictions pour cela. En premier, vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur en premier? Et si nous pouvons voir que si quelqu'un est trop petit, et s'il reçoit la compassion, il reçoit beaucoup de bénédictions. C'est pour ça que Baba nous dit ce devoir pour cette tâche, pour le service, pour le seva, et vous recevez des bénédictions depuis votre cœur. Quand les blessings émergent depuis votre cœur, doivent être finis. Et quelques personnes vont vous donner beaucoup de coopération. De nombreuses fois, il peut y avoir beaucoup de comptes karmiques. Et quand vous recevez ainsi de la coopération de qui que ce soit, n'importe qui, cette coopération, cela signifie que vous prenez du support. Et à ce moment-là, quel que soit ce qui est nécessaire, il y a beaucoup de blessings qui viennent depuis le cœur. Et donc, ce revenu est très élevé. Donc, qu'est-ce que soit ce que nous faisons depuis notre cœur. Et Baba dit qu'un vrai cœur, que le Seigneur est content avec un cœur honnête. Et nous devenons ceux qui sont assis sur le plan du cœur. Ça devient très bien de tourner, d'en comprendre. Et qu'est-ce que nous allons pratiquer? Quel que soit ce que nous le faisons depuis notre cœur. Quand il y a ces bénédictions qui sont reçues, ils continuent d'augmenter. Et dans notre cœur, nous devons porter un tel équilibre. Et nous devons le maintenir pour notre cœur, notre tête, notre intellect. Certains utilisent que l'intellect, mais il n'y a pas de concentration en cela. Certains sont seulement concentrés, mais il n'y a pas de plaisir dans la vie. Et donc, ce que je ressens, il y a un bon équilibre de tout cela. De nombreuses fois, nous disons, si vous pouvez utiliser votre tête, vous pouvez avancer. Mais quelquefois, ils utilisent leur tête, mais pas leur cœur. Mais après avoir appartenu à Baba, nous devons utiliser autant que possible notre tête, nos cœurs, notre sagesse. Quelquefois, nous pouvons utiliser un sens commun et d'autres n'ont pas de sens commun. Non, cela peut être présent, mais cela n'est pas utilisé. Donc, tout le monde portera une attention à cela. Qu'est-ce que soit ce que nous faisons, nous allons le faire à partir de notre cœur.
Et alors la qualité deviendra très bonne et il y aura beaucoup de bonheur, il y aura beaucoup de pouvoir. Il y aura aussi beaucoup de bénédictions que vous allez ainsi recevoir. De nombreuses fois, ce qui se passe, quelquefois vous faites quelque chose et est-ce que cela est fait depuis votre cœur? Vous l'avez réalisé depuis votre cœur, il y a beaucoup de bonheur et beaucoup d'expérience. सच्चे दिल पर साहब राजी परमात्म दिल तख्त Le नशीं vrai cœur, सच्चे दिल से दुआएं कमाना दिलारा qu'un बाप est blessé. अच्छे दिल वाले Le को Père, le ज्यादा réconforteur पसंद des है cœurs, n'aime दुनिया que les का enfants qui ont un दिमाग cœur भी vrai. हो लेकिन बाप को दिल वाले Même si votre पसंद intellect हैं ne présente pas दिमाग la तो forme बाप इतना d'intelligence बड़ा दे देता caractéristique है de ce monde, जिससे le रचे Père हुए aime को ceux जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हो नंबर भी बनते हैं qui सच्ची sait साफ également le दिल début, le के milieu et la आधार fin de la से connaissance. सेवा के Les आधार rangs से sont donnés en fonction d'un सेवा cœur में propre भी सच्चे et दिल vrai से et non sur servir la base du बस service. सिर्फ दिमाग Allez-vous के servir आधार avec से un सेवा cœur vrai ou करेंगे juste avec votre दिमाग tête? वाले नाम Ceux qui कमाते servent avec हैं leur दिल tête वाले gagnent, non? दुआएं Et ceux कमाते qui हैं servent avec leur ओम cœur reçoivent शांति des bénédictions.